Hello and welcome. Daily use sentences. Number 2. I will be late. I will be late. मुझे देर हो जाएगी. मुझे देर हो जाएगी. Here मुझे is to me. देर हो जाएगी means late will happen. Okay, late will happen. Late will happen to me. That is the literal translation of this. But here this means I will be late. He will be quiet. He will be quiet. वह शांत रहेगा. वह शांत रहेगा. वह is he. शांत is patient. Okay, but here it means quiet. रहेगा is will be. They will be more careful. They will be more careful. वे ज्यादा सावधानी बरतेंगे. वे ज्यादा सावधानी बरतेंगे. ओके, वे is they, ज्यादा is more, सावधानी is careful, बरतेंगे here means will be. Okay, but it means will show. Okay, they will show more carefulness. So that is the literal meaning of this. She will be more attentive. She will be more attentive. वह अधिक चौकस रहेंगी. वह अधिक चौकस रहेंगी. वह is she, अधिक is more, चौकस is attentive, रहेंगी is will be. We will be more vocal. We will be more vocal. हम और ज्यादा बोलेंगे. हम और ज्यादा बोलेंगे. Here हम is we, और ज्यादा बोलेंगे means will talk more. Okay, so this sentence literally translates to we will talk more. Next, I won't be late. I will not be late. मैं देर नहीं करूंगा. मैं देर नहीं करूंगा. So मैं is I, देर is late, नहीं करूंगा is will not do. I will not do late. So that is the literal translation. But here this sentence means I won't be late. Raju won't be sarcastic. Raju won't be sarcastic. राजू उपहास नहीं करेगा. राजू उपहास नहीं करेगा. राजू नेम ऑफ द पर्सन. उपहास कर is be sarcastic. उपहास नहीं करेगा is will not be sarcastic. Okay. She won't be alone. She will not be alone. वह अकेली नहीं होगी. वह अकेली नहीं होगी. वह is she, अकेली is alone, नहीं होगी is won't be. They won't be quiet. They won't be quiet. वे चुप नहीं रहेंगे. वे चुप नहीं रहेंगे. वे is they, चुप रह is be quiet, चुप नहीं रहेंगे is will not be quiet. The kids won't be passive or the kids will not be inactive. बच्चे निष्क्रिय नहीं होंगे. बच्चे निष्क्रिय नहीं होंगे. बच्चे is kids, निष्क्रिय is passive or inactive, नहीं होंगे is won't be or will not be. Peel off the potatoes. Peel off the potatoes. आलू को छील ले. आलू को छील ले. आलू को potatoes, छील ले peel off. Peel the banana before you eat it. Peel the banana before you eat it. केले को खाने से पहले छील ले. केले को खाने से पहले छील ले. केले को द बनाना खाने से पहले
बिफोर ईटिंग, ओके, खाने से पहले, बिफोर ईटिंग. छील ले, peel, छील ले, peel. So we have not used any word for you in Hindi sentence. Peel away the sticker before you use it. Peel away the sticker before you use it. उपयोग करने से पहले स्टिकर को छील ले. उपयोग करने से पहले स्टिकर को छील ले. उपयोग कर is use, से पहले is before, स्टिकर को is sticker, छील ले is peel away. The paint began to peel off of the car. The paint began to peel off of the car. कार से पेंट छिलने लगा. कार से पेंट छिलने लगा. कार से from the car, okay, but here it means of the car. Paint, paint, छिलने लगा, began to peel off. छिलने लगा, began to peel off. All right. Next, I have an extra pen. I have an extra pen. मेरे पास अतिरिक्त कलम है. मेरे पास अतिरिक्त कलम है. मेरे पास है is I have. मेरे पास है is I have. What do you have? An extra pen. अतिरिक्त कलम. अतिरिक्त is extra. Kalam is pen. We do not use any word for an in Hindi generally. Okay. They have an important class now. They have an important class now. उनका एक महत्वपूर्ण क्लास है. उनका एक महत्वपूर्ण क्लास है. उनका एक है is they have. An important class, एक महत्वपूर्ण क्लास. Okay. Now is अब, but generally we do not use it in colloquial Hindi also. Okay. It is right if you use it. It is okay if you do not use it too. Shilpa has an appointment with her dentist. Shilpa has an appointment with her dentist. शिल्पा ने अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया है. शिल्पा ने अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया है. सो शिल्पा ने, शिल्पा अपने, हर डेंटिस्ट के साथ, विथ डेंटिस्ट. ओके. सो अपने डेंटिस्ट के साथ, विथ हर डेंटिस्ट, अपॉइंटमेंट लिया है, हैज टेकन एन अपॉइंटमेंट. ओके. लिया है is has taken, appointment is appointment. So here this sentence literally translates to Shilpa has taken an appointment with her dentist. Alright. We have 3 dogs. We have 3 dogs. हमारे पास 3 कुत्ते हैं. हमारे पास 3 कुत्ते हैं. We have is हमारे पास हैं. हमारे पास हैं is we have. What do you have? 3 dogs. 3 कुत्ते. 3 is 3, कुत्ते is dogs. Okay. Thank you for watching my video. You can also watch these videos to improve your Hindi.